आज खुश तो बहुत हो गए तुम, क्यों? बिकॉज आई एम फाइनली व्लॉगिंग, ये फॉर ऑल द गर्ल्स एंड एवरीबडी हु लाइक रिक्वेस्टिंग प्लीज एक व्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है. टुडे इज माई कॉन्वोकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन, एंड आई टॉप्ड इन माई बैच. ये फाइनली आफ्टर years of second, third, fourth and fifth, I topped in my batch. So I'll just take you through everything. Get ready with me for my convocation. Starting with the day with the reality hashtag सच्चाई. This is the सच्चाई, the original phase. मेंटल अवेयरनेस वीक चल रहा है, सो लेट मी जस्ट लाइक अवेयर यू गाइस कि प्लीज सोशल मीडिया को देख के जो एक परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर, प्लीज डोंट गेट डिसीव्ड और फील नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. एक्ने इज नॉर्मल, रेडनेस इज नॉर्मल, acne के marks is normal, your skin will heal eventually, just be happy and please ignore my morning voice and my hair looks like Maggie because मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे so that मेरा सुबह का टाइम बच जाए. It's early morning, I guess it's 7 o'clock right now. I have to reach the venue at 10:30. I have to get ready and everything, so yeah, let's get started. Cheers. This actually wakes me up and now I can say I'm fully awake. So after this I'll drink my hot water. कभी सुबह उठते ब्रश नहीं करती unlike other people. आपके अंदर का जो एक कहते हैं व्हाट डू यू से इन हिंदी, राल एंड ऑल जो कहते हैं वो बहुत अच्छा एक एंटी बैक्टीरियल होता है, सो वो अंदर जाना चाहिए आपकी बॉडी के. सो आई ऑलवेज ड्रिंक दिस आंवला जूस इन द मॉर्निंग विच इज लाइक अ बूस्ट ऑफ विटामिन सी फॉर माई बॉडी जस्ट टू क्लियर आउट द डार्क स्पॉट्स एज वेल. एंड आई विल इंक्लूड द लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड. इस वाले आंवला जूस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैंने अमेजोन से लिया था आई गेस. Wait, let me just show you guys. Kindly ignore the mess that I created. So this is the amla juice that I consume in the morning. This is from the brand Kapiva Amla Juice Immunity Booster, and currently I'm focusing on like dark spots thing for my face also, so I'm like using boost of vitamin C. This is like a consumption form, then I apply vitamin C based serums as well, and yeah. सो दिस इज़ माई हॉट वाटर एंड आई जस्ट सिप इट. यूजली मैं पानी पीते पीते सुबह सोशल मीडिया खोल लेती हूँ विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट, बट टाइम पास तो करना होता है यार. सो चीज़ ना आई बी मेकिंग माई ब्रेकफास्ट बिकॉज मैं नहाने के बाद बेसिकली वो बनाने वाली हूँ. सो उससे पहले मैं अपना बैटर बना के रख दूँगी सो दैट जो इसके अंदर सूजी डलती है वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए, बड़ी हो जाए थोड़ी सी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ माई वेरी फेमस फैट बढ़ाने वाला मलाई सूजी ब्रेड. आई लव इट. आई डोंट नो इवेंट कितने घंटे चलेगा, सो आई नीड टू बी फुल. सो लेट्स गेट रेडी विद मी नाउ, स्टार्टिंग विद स्किन केयर एंड मेकअप. सबसे पहले मैं आइसिंग करती हूँ सो दैट पोर्स एकदम टाइट हो जाएं. आइसिंग आपके एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. एंड द सेम टाइम मेक श्योर आपके पोर्स टाइट हो जाएं सो दैट मेकअप ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर ना जाए. नाउ वेयरिंग लेंसेज, हर बार का स्ट्रगल होता है लेंसेज पहनना. सो स्टार्टिंग विद स्किन केयर, विटामिन सी सीरम. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं इस टाइम विटामिन सी बेस्ड एक तरह प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ सो दैट ये डार्क स्पॉट्स एंड ऑल को भी रिड्यूस करे. एट द सेम टाइम हाइड्रेशन भी देता है. आई विल रिव्यू इट डेफिनेटली. नाउ going up with my simple का moisturizer. I've mentioned this a lot of time on my Instagram story, so if you're not following on Instagram then please go there and follow me because छोटे मोटे reviews मैं वहीं पर ही कर देती हूँ. Now going up with my Jacqueline का primer just to smoothen out the face, especially around the T-zone area so that ज़्यादा sweating and all हो तो makeup मेरा बज ना हो. Now going up with color correction. अब हर बार यही होता है whenever I'm shooting, हमेशा कुछ ना कुछ मैसअप होता है बिकॉज कैमरा के सामने पता नहीं मैं जब भी मेकअप करती हूँ कुछ ना कुछ मैसअप हो जाता है. इस बार हल्का सा मैंने आई गेस कलर करेक्शन
करेक्शन थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मेरा फेस हल्का सा रेड ज़्यादा दिख रहा था. सो बेसिकली मैं ऑरेंज कलर करेक्टर इसलिए यूज़ करती हूँ तो जितने भी डार्क स्पॉट्स एंड ऑल होते हैं वो हाइड हो जाते हैं. खाली रिलाइंग ऑन जस्ट फाउंडेशन एंड कंसीलर नहीं देता वो फुल कवरेज. यू नीड टू यूज़ एन ऑरेंज कलर करेक्टर अगर आप मेरी स्किन टोन के, इंडियन स्किन टोन होती है आपकी. सो नाउ गोइंग अप विद फाउंडेशन, मिक्सिंग टू फाउंडेशन, जैकलीन का एंड मैक्स फैक्टर का फाउंडेशन, मेकिंग माई एग्जैक्ट माई स्किन शेड एंड गोइंग अप. सबसे पहले मैं डैब करती हूँ अपने फेस पे. मैं डायरेक्ट किसी ब्रश या स्पंज से नहीं लगाती बिकॉज वो सोकअप कर लेता है. सबसे पहले उसको अच्छे से डैब 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 करके उसके बाद मैं फाइनली कोई स्पंज यूज़ करती हूँ टू जस्ट इवन आउट एवरीथिंग. सो हल्का हल्का आपको यहाँ पे हल्का सा फेस रेड लग रहा होगा, इसलिए मैंने एक और लेयर फाउंडेशन के साथ गई मैं, सो दैट जस्ट टू कवर एवरीथिंग अप. बट इट वॉज लुकिंग ओके एट द एंड. एंड या डूइंग ऑल द जैज. नेक पर भी कवर करना ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पर भी इवन लगना चाहिए. नाउ गोइंग अप विद कंसीलर. ये मेरा फ्लिका कॉस्मेटिक्स का कंसीलर है. मैंने इसकी अनबॉक्सिंग IGTV पर करी हुई है, अपने इंस्टाग्राम TV पर. ये एक न्यू ब्रांड है इंडिया में. सो नाउ गोइंग अप विद फिटमी का लूज पाउडर. अगेन वेरी ब्यूटीफुल लूज पाउडर. दिस लाइक द बेस्ट वन इन बजट. मैंने ये मीडियम स्किन का, मीडियम शेड का ले लिया तो हल्का सा ही डार्क था, तो मैं उससे बेकिंग नहीं करती हूँ बिकॉज वो लाइट नहीं है इतना अच्छा बेकिंग के लिए. सो हेयर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का कॉम्बिनेशन, जो कॉम्पैक्ट और कॉन्टोर का कॉम्बिनेशन आता है. ये मैंने नायका की सेल पे आई गेस 250 समथिंग का मुझे पड़ा था, ऑलमोस्ट 50% ऑफ, एंड इट इज़ अमेजिंग. एक साइड से आप कॉम्पैक्ट, एक साइड से आप कंसीलर कॉन्टोर कर सकते हैं. नाउ गोइंग अप विद आई शैडो. बहुत मिनिमलिस्टिक आई शैडो करने वाली हूँ बिकॉज ज़्यादा लाउड अच्छा नहीं लगेगा. सो यहाँ पे मैंने परफेक्ट फिल्टर यूज़ किया है आई शैडो का फ्रॉम निक्स कॉस्मेटिक्स. हल्का सा उनका रेडिश टोन है, हल्का सा उनका येलोइश टोन से मैंने एक ट्रांजिशन बनाया अपनी आइज़ पर. नाउ यूजिंग माई फेवरेट आई लाइनर विच इज़ फ्रॉम लैक्मे. एब्सोल्यूट लव 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 दिस आई लाइनर. आई मैंशन दिस लाइक 1000 टाइम्स ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. बिल्कुल बज नहीं होता और विंग इतना परफेक्ट बनता है इससे. नाउ डस्टिंग ऑफ द बेकिंग. जो मैंने अपने वेट एंड वाइट के कॉन्टोर पैलेट से बेकिंग करी थी, मैंने उसको डस्ट ऑफ कर दिया. अपने लोअर वाटर लाइन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलीन का ही काजल. मैनी जैकलीन प्रोडक्ट्स हेयर इन द वीडियो. अगेन जैकलीन का ब्लश, वेरी नाइस सिंपल लाइक बेसिक काइंड ऑफ ब्लश है. बहुत अच्छा शेड है इसका. एवरी डिटेल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द लिंक्स एंड ऑल बिकॉज अभी नायका की सेल भी चल रही है, सो मे बी कुछ प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पर हो. हाईलाइटर के लिए भी मैंने अपना जैकलीन का हाईलाइटर यूज़ किया है. नाउ जस्ट यूजिंग वेरी लाइट मस्कारा ऑन माई लैशेज. मैं बहुत लाइट मस्कारा लगाती हूँ, नॉट वेरी हैवी. और नाउ जस्ट करेक्टिंग अप द आई लाइनर बिकॉज परफेक्ट विंग तो कभी बन ही नहीं सकता ज़िंदगी में. नाउ लॉकिंग अप एवरीथिंग विद माई निक्स का सेटिंग स्प्रे समथिंग. सो हाथों में मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड का हेयर रिडक्शन क्रीम. मैंने इसका अलग से सेपरेटली यूट्यूब पर रिव्यू किया हुआ है, सो यू कैन वॉच इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. मैंने आज शेविंग करी थी तो मैं जिस दिन शेव करती हूँ उस दिन ये हेयर रिडक्शन क्रीम को यूज़ करती हूँ. नाउ स्टाइलिंग माई हेयर एज़ यूजुअल. मैंने रात को मास्क लगाया था, हेयर मास्क DIY. मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूँगी कौन सा वाला. उसके बाद मैं हेड वॉश करके सो गई थी तो मैंने टैंगलिंग नहीं करी थी, अपने बालों की डिटैंगल नहीं किए थे. तो मैं सबसे पहले अपना वुड कोम यूज़ करती हूँ टू डिटैंगल, देन प्लास्टिक कोम से यूजुअल लाइक मैं से फटाफट प्रेसिंग कर लेती हूँ. एंड यू कैन सी मैं कोई हीट प्रोडक्शन स्प्रे एज सच यूज़ नहीं करती है. मेरी रेमिंगटन की प्रेसिंग मशीन है, बहुत अमेजिंग है. इससे बाल मेरे एकदम शाइनी हो जाते हैं, कभी नहीं जलते. एंड आई लव दिस प्रेसिंग मशीन. एंड आफ्टर अप्लाइंग सीरम यू कैन सी काफ़ी अच्छी शाइन आ गई बालों में. नाउ जस्ट महक के लिए मैं ऐड कर रही हूँ माई फेवरेट परफ्यूम बल्गारी का. मैं कभी कभी अच्छे इवेंट्स पे यूज़ कर लेती हूँ. एंड यूजिंग माई रॉयल मस्क बॉडी मिस्ट फ्रॉम न्यू यू. नाउ फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस डेविस का लिप लाइनर. ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है. आई लव दिस शेड. एंड इसके ऊपर मैं अपना फ्लावर ब्यूटी की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ इन द शेड सिनेमन क्रश आई गेस. वेरी ब्यूटीफुल न्यूडिश पिंक काइंड ऑफ कलर. आई वुड से न्यूडिश पिंक. And this is how my makeup look turned out. Straight hair, just very minimalistic eyeshadow because थोड़ा कॉलेज टाइप का इवेंट है तो बहुत ज़्यादा लाउड आई शेडो अच्छी नहीं लगती. एंड माई फेवरेट न्यूड काइंड ऑफ लिप्स. मैंने पिंक लिप लाइनर यूज़ किया था तो हल्के से डार्क पिंक टोन में है, बट आई लिक माई लिप्स अ लॉट तो ये वैसे ही फेड आउट होने वाली है. एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. आई विल डेफिनेटली पोस्ट प्रॉपर लाइक what I am wearing right now. It's like a long blazer set. And yeah, let's go. Bye.
I'm back and as you can see from my हालत काफ़ी बुरी हालत हो गई है, पैर से लेके शरीर पूरा टूट रहा है. So that is it for my today's day in my life kind of vlog. I hope you love this vlog. बहुत सारे comments आते हैं लोगों की कि vlog बनाओ, and I was like मेरी life इतनी ज़्यादा interesting नहीं है कि vlog बन सके, but today was like a really special day for me, so I was like why not just share this with my family. So if you like it, give it a big thumbs up, share this with your best friend, do subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया हो, and अगर और ऐसे vlogs देखने हैं तो please comment down below and any other kind of request that you have. And yeah, that is it for today's video. I hope you loved it. Bye.